Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the third question of exercise. Question is, in figure, as you can see the figure, A, B and C are the points on side OP, OQ and QR respectively. ये दिए हुए इन साइड पर ABC पॉइंट सच दैट, और किस तरह से दिए हैं, AB is parallel to PQ, AB क्या है, PQ के पैरेलल है, एंड AC PR के पैरेलल है. Then show that BC is parallel to QR. Then you have to show BC is parallel to QR. ये आपको शो करना है. See how can I show? Now student, first we will see in the figure and see in triangle, first of all in triangle OPQ, in triangle OPQ. OPQ में हमें ये दिया है AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ, this is given. So by basic proportionality theorem, by Thales theorem, what I can write? I can write OA upon OP is equal to OB upon OC. I can OB upon OQ by Thales theorem या basic proportionality theorem. And mark it equation 1. Again, see in triangle OPR में what I can write? Since AC is parallel to PR, AC is parallel to PR and it is given to you. So what I can write by basic proportionality theorem, Thales theorem से मैं क्या लिख सकता हूँ? Thales theorem से मैं लिख सकता हूँ कि OA upon OP is equal to OC upon OR. ये मैं लिख सकता हूँ. And mark it equation 2. Again same reason by Thales theorem. Same reason, this reason. Thales theorem से हमें पता है कि when one side intersect two side of the triangle in same proportion when it is parallel to the third side of triangle. यानी अगर कोई साइड थर्ड साइड के पैरेलल हो ट्रायंगल के, तो वो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो यानी प्रोपोर्शनल में इंटरसेक्ट करती है. सेम यहाँ पर रीजन है थेल्स थ्योरम का. नाउ फ्रॉम 1 and 2 यू कैन सी फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पर बोथ लेफ्ट साइड आर इक्वल, तो राइट साइड भी इक्वल होंगे यहाँ पे. फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई कैन राइट? OB upon OQ is equal to OC upon OR होता है. Therefore by converse of हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. थेल्स थ्योरम, और वो क्या कहता है? व्हेन अ साइड डिवाइड्स two sides of a triangle in same ratio या proportional in same ratio, then it is parallel to third side of triangle. So therefore this implies that BC is parallel to QR, और यही आपको क्या था? प्रूव